Hi, good evening, everyone. So, thank you for joining for this webinar. This webinar में we'll be talking about changes which have happened in smart beta indices, and these indices have Mirae asset products based on them. So, we'll just talk about कि कैसे ये index changes uh, take place and what has actually happened. So let me very quickly give you a brief overview. We have right now four products in smart beta space, also known as factor investing, जिनका काम होता है एक particular behavior को target करना, right? So we have a Nifty 100 low vol 30 ETF जो कि stable companies को target करता है, वो company जिनकी price वॉलेटिलिटी ऑन दी लोअर साइड होती है, तो फंड की वॉलेटिलिटी भी ऑन दी लोअर साइड होती है. देन वी हैव अल्फा 30. इस समय काफी अच्छा परफॉर्म किया है अल्फा 30 ETF ने, इनफैक्ट सिंस इंसेप्शन, and we launched this fund October last year, and since October last year this has given around 60% return. So alpha 30 is something, 30 best performing companies based on stock returns are selected in this portfolio. And then we have two very unique products again on the multi-factor side, जहाँ पे एक फैक्टर नहीं दो फैक्टर्स का यूज करते हैं हम लोग टू सेलेक्ट कंपनी. वन इज इंडियाज first and only mid and small cap fund where 100 companies are forming part of the portfolio, and selection is based on momentum and quality metrics. The companies which are giving good stock returns and companies which have quality business and are having good quality metrics like return on equity, earning stability, debt equity ratio, leverage, etc. And same last में we have a small cap fund also, जिसमें there are 100 stocks again selected based on momentum metrics and quality metrics. So price performance as well as how good the company is. So very quickly, the first फंड विल टॉक अबाउट जिसमें सबसे ज्यादा क्या नाम है चेंज आता है, दैट इज अल्फा 30. अल्फा 30 is basically an index by NSE which is quarterly rebalanced. So every quarter NSE checks which stocks have generated alpha in last 1 year, and जो स्टॉक अल्फा जनरेट कर रहे होते हैं, रिलेटिवली ज्यादा जनरेट कर रहे होते हैं, those stocks are brought into the portfolio, and stocks which are relatively generating poor performance are removed from the portfolio. So it is completely performance driven index. And history में हमने देखा है कि इस पोर्टफोलियो में काफी बदलाव आता है. Into 2021, in March 2021, 17 stocks were removed in a single day itself. Similarly, in 2022, 4 में से 2 रीबैलेंसिंग ऐसी थी जिसमें 12 और 13 स्टॉक्स, which is almost half of the portfolio, was removed. So typically हमने देखा है कि अल्फा में चर्निंग काफी होती है बिकॉज स्टॉक्स की परफॉर्मेंस साइकिल चेंज होती है, स्टॉक परफॉर्मेंस साइकिल चेंज होती है, एंड वैसे ही क्विकली अल्फा, क्योंकि क्वार्टरली रिवैल हो रहा है, ट्राइज टू कैप्चर दीज न्यू स्टॉक्स विच आर परफॉर्मिंग बेटर in the portfolio. So now let's see what happened in alpha today. In alpha index and hence alpha ETF, 5 stocks went out of the portfolio and 5 new stocks came in. The stocks which went out of the portfolio was DLF, Shriram Finance, Torrent Pharma, L&T Finance, and Persistent System. Now, stock which came into the alpha portfolio was Industars, Polycab, Siemens, HDFC AMC, and Samvardhana Motherson. And weight wise also काफी अच्छे वेट के साथ ये लोग पोर्टफोलियो में अंदर आए हैं, which implies that these stocks have delivered good alpha over the benchmark in last 1 year. क्योंकि इस इंडेक्स में the weightage of the stock is also based on
योर आउट परफॉर्मेंस. जिसका जितना अल्फा उसको इतना वेट. मार्केट कैप डज नॉट प्ले एनी रोल. नाउ व्हेन वी लुक एट सेक्टर, सो ये तो स्टॉक चेंज थे. 5 न्यू स्टॉक्स इन, 5 करंट स्टॉक्स आउट. एंड इससे एक और चीज हुई है, एंड ये आई थिंक काफी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हुई है, दैट नाउ index is more skewed towards large cap, right? In end of 2023, 42% of the portfolio was large cap. Now 57% of the portfolio is large cap. So there is a shift also in index which is happening from a mid cap to a large cap, from 42 to 57. Just see the old trend also. From sectoral exposure also, please see the last column, and you can see that capital goods allocation have increased by 4%. Financial services have decreased by almost 4 to 5%. And again, we see a decrease in case of automobiles, healthcare, and increase in oil and gas and telecommunication and services. So there's a stock level changes which has resulted in sector level changes also, and more interestingly, market cap allocation change also. So now alpha, after a long time, after a few quarters, is back. This is the story for alpha, for this rebalancing, that I think of after almost 4 quarters, we have almost 57-60% allocation towards large cap. So again, 5 stocks in, 5 stocks out. Name you can see in front of your screen. Sector changes में capital goods पे allocation बढ़ा है. The sectors which have lost out from allocation point of view are financial services, auto, healthcare. The ones which have gained apart from capital good is oil and gas, services, telecommunication, so and consumer durable also. Consumer durable was 0%. It's now 4.4%. एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, is the weightage shift also. So the stocks which are already in the portfolio but are doing better will now get a higher weight. So you see a higher weight towards PNB and NMDC. Almost 1% का higher weight रहेगा. And Cummins India. On the flip side, Aurobindo Pharma, TVS Motor, and Indian Oil are going to have a lower weight. And you'll be surprised to know that ye changes, the changes are that today itself we have churned 22% of the portfolio. One side. So we have churned almost 22% of the portfolio. So that was on alpha. Very quickly recap. Number of stocks कम गए हैं. Usually we have seen on an average 7 to 8 stocks. इस बार only 5 stocks have came in, gone out. More importantly, index has become tilted towards large cap side from mid cap. From mid cap tilt which it was showing in 2023. सेक्टर में भी शिफ्ट आए हैं, कुछ मेजर नहीं आया है, बट यू नाउ हैव लोअर एलोकेशन टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, automobiles, etc., and you now have more allocation towards consumer durables and more allocation towards oil and gas. Also कुछ stocks में weight shifts भी आए हैं. Overall we are seeing a 22% change in the portfolio which we have implemented today. So all these changes are getting effective tomorrow. तो जब भी रीबैलेंसिंग होती है एंड गेटिंग इफेक्टेड अगर कल हो रही होती है तो वी डू इट एंड ऑफ डे टुडे. सो ये आज जितने भी चेंजेस हैं वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए हैं फंड में लास्ट हाफ एन आवर में. अभी सेकेंड प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज निफ्टी 100 low vol 30. Now as low vol name itself suggests, it is a more stable portfolio consisting of more stable companies. And here, if you look, only one stock has changed. And again, data देख के लग जाएगा. Power Grid has gone out because Power Grid exhibited higher volatility
within the portfolio, as you can see in the number which we have put out, almost 27.8%. And Bharti Airtel has come inside the portfolio. So Power Grid has gone out. Bharti Airtel has come in. In terms of churn, it is only 6.7% of the portfolio. So Alpha में हमने 22% churn देखा था. यहाँ पे we are seeing 6.7%. Alpha, just to recap very quickly, Indus, Polycab, Siemens, HDFC, and Samvardhana came in. DLF, Shriram, Torrent, L&T Finance, and Persistent went out. In case of low vol, only Power Grid went out. And Bharti Airtel, with a weight of 3.8%, has come inside the portfolio. So 2 updates done. Now we'll talk about कि small cap में क्या हुआ. So very quickly, small cap is a 100 stock portfolio. यहाँ पे stocks are selected based on liquidity, quality and momentum metrics. अभी the only difference compared to last 2 indices were कि low vol and alpha are rebalanced quarterly. So quarterly assessment होता है alpha का भी और low vol का भी. In case of small cap and mid and small cap momentum quality, the rebalance done twice in a year. So 6 monthly hota hai. So alpha low vol quarterly, small cap and mid and small cap semi-annually. And this happens in June and December. So June में ये rebalancing हुई है. And as I mentioned, stock selection is always on liquidity, quality and momentum. हर स्टॉक को assess किया जाता है कि liquid है कि नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है कि नहीं, बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस वेरिएबिलिटी, डेट इक्विटी रेशियो. एंड देन मोमेंटम पे भी देखते हैं कि 6 महीने और 12 महीने का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है. एंड विच एवर स्टॉक्स आर डूइंग वेल ऑन ऑल दी मेट्रिक्स आर सेलेक्टेड, एंड विच एवर आर नॉट डूइंग वेल आर रिमूव्ड फ्रॉम द पोर्टफोलियो. द फंड हैज डन रियली वेल. इनफैक्ट AUM भी अब इसका लास्ट 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ था. इट्स नाउ मोर देन 250 crores. It's doing well. Now, as expected, there are 21 stocks which have come inside and 21 stocks which have gone outside the portfolio. So it's a significant shift in small cap, and ये कुछ नया रीबैलेंसिंग में निकलते हैं जो कि 6 महीने में एक बार होती है. So 21 stocks have come in and 21 stocks have moved out. The overall change impact on the portfolio is 32%. So आज हमने 32% of the portfolio को बेचा है and 32% of portfolio को खरीदा है. So on a 250 crores portfolio, today buying and selling was roughly around 80 to 90 crores on the selling side and 80 to 90 crores on the buying side. So see how sorts of active this passive product is, right? In terms of see यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने guess work भी किया है कि रीजन क्या है स्टॉक के मूव आउट करने का, बिकॉज NSE does not tell you exact reason. So we looked at data and we tried to sort of figure out कि क्या reason हो सकता है. So let's first talk about exclusion. So KEI Industries, Rallis India, Delta Corp, Aarti Drugs, Lux Industries, etc. वो अब small cap ही नहीं रह गई है. ये कंपनियां माइक्रो कैप बन गई हैं. तो अब क्योंकि स्मॉल कैप ही नहीं है तो इनको हटा दिया गया है पोर्टफोलियो में से. ज्यादातर कंपनी आपकी मोमेंटम के बेसिस पे भी निकली हैं, हम जैसा देख रहे हैं. एंड कुछ कंपनियां क्वालिटी के बेसिस पे भी निकली हैं, बिकॉज अगर उनका क्वालिटी स्कोर ऑन द कम लेस साइड. अगेन मोमेंटम एंड क्वालिटी इज बिट ऑफ अ गेस वर्क जो हम लोगों ने इंटरनल डेटा के बेसिस पे ऑब्जर्व किया है. द रीजन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द NSE's रीजनिंग, बिकॉज NSE के पास कंप्लीटली डिफरेंट डेटा सेट है. इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी निकली है वो KEI इंडस्ट्री है एंड BSE है. 3.5% वेट था KEI का एंड BSE का 2.6% वेट. जो कंपनियां आई हैं उसमें से आई थिंक
lot of good names also: Hudco, Crompton, Exide, National Aluminium, Titagarh, Jupiter Wagon, EIH, Great Eastern, BML, Himadri, Chemical, HBL Power System, etc. And एक काफी sorts of well spread out weightage में आई है. तो Hudco is highest holding at 3.1 जो अंदर आ रही है, Crompton 3, Exide 2.9, नेशनल एल्यूमिनियम एट 2.7. एंड आप देख सकते हैं एक वेल स्प्रेड आउट आया है. तो जैसा मैंने बोला, आज वी हैव sold almost 32% of portfolio and bought around 32% of portfolio. So a big change for small cap index. From a sector point of view, अगर हम देखें कि क्या शिफ्ट हुआ है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने बोला, वन ऑफ द टॉप 2 स्टॉक्स जो कि बाहर गए हैं उसमें बीएससी भी आता है. सो फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख रहे हैं 25% एलोकेशन, ऑलमोस्ट 24.6 एलोकेशन से 19.6, तो 5% रिड्यूस हुआ है एलोकेशन. आईटी में ऑलमोस्ट 4% रिड्यूस हुआ है, हेल्थ केयर में 3% रिड्यूस हुआ है. इंक्रीज इन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, राइट? अगर इफ यू रिमेंबर इन द पास्ट स्लाइड, वी सॉ एक्साइड कमिंग इन, राइट, एज वन ऑफ द higher allocation, and you can see Ola Electra is also there, Jupiter Wagon is also there. So ये कंपनीज दिख रही हैं जो कि ऑटो सेगमेंट की भी अंदर आई हैं, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट 3% एलोकेशन से बढ़ करके स्मॉल कैप में ऑटोमोबाइल का 8.8% एलोकेशन हो गया है. सो द बिगेस्ट मूवर इज ऑटोमोबाइल. Now the second biggest gainer in sectoral weightages is metal and mining. 1.3% से ऑलमोस्ट 5% के आसपास हो गया है. एंड अगेन द रीजन बीइंग इज कि नेशनल एल्यूमिनियम, वन ऑफ द हायर वेटेजेस स्टॉक्स जो कि पोर्टफोलियो के अंदर आया है. सो देयर हैज बीन अ रीजनेबल चेंज इन द पोर्टफोलियो. 21 स्टॉक बाहर गए, 21 स्टॉक अंदर आए हैं. 32% ऑफ पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट चर्न हुआ है ऑन द सिंगल साइड. एंड सेक्टर के मामले में भी हम लोग देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड आईटी रिड्यूस हुए हैं, एंड आपके ऑटोमोबाइल, मेटल एंड माइनिंग्स का एलोकेशन इंक्रीज हुआ है. नाउ वील टॉक अबाउट द लास्ट प्रोडक्ट विच इज मिड एंड स्मॉल कैप. ये भी पोर्टफोलियो बेसिकली हर 6 महीने पे रिव्यू होता है जैसे कि स्मॉल कैप होता है. तो मैं अगेन रिटेरेटिंग, अल्फा एंड लो वॉल क्वार्टरली रिव्यू होते हैं, एंड स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी एंड मिड एंड स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी 6 महीने में एक बार रिव्यू होते हैं. ये वाला भी जो फंड है कंसिस्ट ऑफ 100 स्टॉक्स. इट इज इंडियाज ओनली मिड एंड स्मॉल कैप फंड. इट कंसिस्ट ऑफ 50 स्मॉल कैप स्टॉक्स and 50 mid cap stocks. So a very unique portfolio creation process. Again, सारे stocks are assessed on momentum, assessed on quality, and assessed on liquidity metrics. Now let's see यहाँ पे क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो चेंज. सो जैसे स्मॉल कैप में शिफ्ट आया था रीजनेबल, वैसा ही शिफ्ट यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं. स्मॉल कैप में, इफ यू रिमेंबर, 21 स्टॉक्स मूव्ड इन मूव्ड आउट. यहाँ पे दैट नंबर इज 23. सो 23 स्टॉक्स मूव्ड इन एंड मूव्ड आउट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो. एंड स्मॉल कैप पे हमने देखा था तकरीबन 32% का churn था. 32% of portfolio was sold and 32% of portfolio was bought in. Same यहाँ पे भी 31 is the churn, 31%. So 31% of portfolio was sold today and 31% of portfolio was bought today. This includes जो भी आ रहे हैं स्टॉक्स, उनके वेट्स जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, एंड साथ में ऑब्वियसली जो इंटरनल शफलिंग हो रही है. कुछ स्टॉक्स का वेट बढ़ रहा है, कुछ स्टॉक्स का वेट घट रहा है. नाउ अगेन आई टॉक अबाउट एक्सक्लूजन फर्स्ट because I think it is very straightforward. REC and PFC, the two largest holding in mid and small cap, have now moved out of the portfolio. So this 10% shift alone is by top 2 stocks. Why they have moved out? The reason they have moved out is that now they are large cap companies.
they are part of Nifty Next 50. So these are large cap companies now, so they won't be part of mid and small cap index. So REC and PFC have moved out. Then you have a lot of other companies also like Tube, MCX, Cient, AIA, Schieffler, Sonata, Janta, Gujarat Fluoro, etc., which have also moved out of the portfolio. We feel that most of them have moved out because of momentum. Again, disclaimer that this is something which we have done at our end to analyze what can be the possible reason, but NSE के reasons कुछ और ही हो सकते हैं. In terms of inclusion, again a well spread out portfolio. आप सबसे important चीज है कि आप REC, PFC 5% स्टॉक्स जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक जो अंदर आ रहा है वो वोल्टास है. पेनलेस 1.9, रेल विकास 1.8, थर्मैक्स 1.7, National Aluminium. If you remember, National Aluminium is also coming in the small cap also. So 1.3% there also. Now, the good thing and one thing which that since the weight of the stocks are less जो कि अंदर आ रहे हैं compared to what is going out, an intuitive understanding will be the stocks which are going out, so the existing stocks higher weightages. That's another way to look at it, right? Now this is the last slide, and after that I'll just quickly summarize and take questions if there are any. Again, from a sectoral change point of view, like in case of small cap, you can see financial services का weightage कम हुआ है. यहाँ पर straight forward reason है कि REC, PFC have moved out because now they are large cap. So that is one reason why financial services have gone down. And apart from that, I think IT has gone down around 3.6% from 12.2 to 8.6. And as it has happened in other products, capital goods allocation have increased by 6.5%. Metal and mining has increased by 3.8%. National Aluminium being one of the culprit जो हम देख रहे हैं across, and consumer durables like Voltas का नाम हमने देखा. अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, then you have other companies also. So you can see consumer durables also gathering a higher वेटेज. So एक ट्रेंड देखा हम लोगों ने, राइट? फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, हेल्थ केयर में एलोकेशन थोड़े से कम हो रहे हैं, एंड मेटल एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स, इनफैक्ट ऑयल एंड गैस में भी हमने इंक्रीज एलोकेशन देखे हैं. साथ ही साथ वी आर सीइंग एलोकेशन हायर ऑन द कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड ऑल्सो फ्रॉम अ सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. So this is the sectoral shift in case of mid and small cap. So again, as I mentioned, very heavy churn which we are seeing. Just to quickly summarize, in case of Alpha, there was 5 stocks in and out. Name you can see. These were roughly around 20-22% of portfolio जो हमने खरीदा बेचा है आज. It includes stocks in, stocks out, as well as any internal changes. बहुत टाइम बाद अभी Alpha portfolio is a bit tilted towards large cap now. 57% now it will be large cap, जबकि last year end पे 2023 end पे it was 42% large cap only. In case of low vol, just one change: power grid going out, Bharti Airtel coming in, churn only 6.7%. In case of small cap, 21 stocks moving in and moving out, around 32% of churn. नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं. एंड अगेन, जैसा मैंने पहले बोला, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, हेल्थ केयर में थोड़ा सा लोअर हुआ है एलोकेशन. We see that in mid cap, mid and small cap also, and in mid and small cap, finally 23 stocks moved in, moved out, and 31% of portfolio
was churned to metal and mining, soil and gas, consumer durables, lesser towards IT, healthcare, and financial services. So that's it from me. This was an update for rebalancing, which has happened in four indices, and hence जो ये आती है जब जब इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, सो ये सारे चेंजेस कल हाफ एन आवर में किए ताकि कल से फंड में भी वही स्टॉक्स दिखे जो कि इंडेक्स में स्टॉक है. So काफी interesting a day prior to the index rebalancing date, and we just thought that we'll start a new sorts of webinar series जहाँ पे हम लोग हर बार rebalancing की बात करेंगे, telling which stocks are coming in and which stocks are going out, and giving a possible reason to it because NSE does not disclose the actual reason. Now, if there is any question, please you can write in the chat box, comment box, and I'll be happy to take few of them. But I don't see any question right now. So I'll wait for 30 seconds. Otherwise, I'll just close this call. Okay, so I don't see any question. Thank you everyone for attending this webinar. We hope you like this very interesting subject with which we are trying to come out with and trying to talk about, which is rebalancing of passive products. Passive is not actually passive when it comes to portfolio changes. As you can see, around 30% of portfolios getting churned. It is at times more than active funds also, right? So great to have you guys here. If you have any question, please do reach out to us. And thank you for attending this webinar. Goodbye.